Okay, word explorers, buckle up because today we are diving into the land of letter N. Yes, the letter that sounds soft but hits hard with some seriously powerful vocabulary. From sneaky words to noble ones, from everyday expressions to rare gems. So, get ready to nab new knowledge, stay nimble with your learning, and say goodbye to boring vocab forever. Let's go. The first is nab, and this means to suddenly catch or seize someone or something, often unexpectedly or quickly. Nab का मतलब होता है जब आप किसी को पकड़ लेते हो, ठीक है? You either catch them or you seize them or arrest someone suddenly, एकदम से. It is informal and often used in news or conversation. ये word suggest करता है quick action. Daily life में पुलिस में nab a thief. It implies surprise. Example, the police nabbed the suspect. Now we have Nadir, and this refers to the lowest point of a situation, especially a time of greatest failure or despair. Nadir एक ऐसे point को refer करता है which is like the lowest of the point in any kind of situation, mood or fortune. ठीक है? It often contrasts with zenith, which is the highest point. ठीक है? ये word use किया जाता है in both literal and figurative context. नादिर का मतलब ये होता है कि किसी चीज का सबसे लोएस्ट पॉइंट, जब आप मतलब अपने सबसे ग्रेटेस्ट फेलियर पे हो, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हो, ठीक है? व्हेन यू ब्रेक डाउन एंड यू आर लाइक दी at the lowest point. It could be your mindset, it could be a failure, it could be a situation. Daily life में failure can feel like nadir and it implies depth. Example, his courage reached its nadir last year. Now we have naive, and this is a person who is innocent or inexperienced and tends to trust others too easily without questioning them. Naive का मतलब होता है एक ऐसा person जो कि बहुत innocent है, trusting है और उसके पास experience नहीं है, ठीक है? तो वो दूसरे बंदों की बातों में ना बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी trust कर लेते हैं, ठीक है? It often suggests a lack of worldly wisdom. ये वर्ड कैन बी जेंटल और क्रिटिकल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. डेली लाइफ में जो नए स्टूडेंट्स होते हैं दे मे सीम नाइव, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, तो उनको कुछ भी बोलो तो वो मान लेते हैं कि हाँ यार ये चीज़ ऐसी होएगी. इट इम्प्लाइज सिंप्लिसिटी. एग्जाम्पल, शी वॉज नाइव टू बिलीव द प्रॉमिस. Now we have Nark, and this is someone who informs on others to authoritize, or it means to annoy or irritate someone. नार्क का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करो या फिर गुस्सा दिलाओ परसिस्टेंटली, ठीक है? ब्रिटिश यूसेज में इट ऑल्सो मीन्स सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मर जो इधर की बात उधर जाके बता रहा है, ठीक है? ये वर्ड इन्फॉर्मल है. डेली लाइफ में कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स कैन नाक पीपल. इट इम्प्लाइज इरिटेशन. एग्जाम्पल, हिज हैबिट्स रियली नाक मी. Now we have natter, and this means to talk continuously about small or trivial matters in a light or casual way. Natter का मतलब होता है जब आप casually किसी से chat कर रहे हो या फिर बात कर रहे हो at length about unimportant and trivial things. ये light और informal tone में यूज किया जाता है. ये word suggest करता है एक friendly conversation. Daily life में friends जो है either they would natter over tea और बाहर घूम के they would like natter कि हाँ यार देखो पता है ये हो गया and you would talk at length. बहुत लंबी duration के लिए तुम एक छोटी छोटी बातों पे बात करोगे. Example, they sat and nattered for hours. Now we have not, and this means nothing or zero, and it is often used in older or poetic expressions. Not का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं या फिर zero, nothing. ठीक है? इट इज एन ओल्डर और लिटरेरी वर्ड. ये वर्ड ऑफन अपीयर किया जाता है पोइट्री या फॉर्मल राइटिंग में. डेली लाइफ में नॉट मे रिप्लेस नथिंग स्टाइलिस्टिकली. एग्जाम्पल, ऑल हिज एफर्ट केम टू अ नॉट, केम टू जीरो. नाउ वी हैव Navvy, and this is a laborer employed in a heavy construction work, especially building roads, canals or railways. Navvy एक manual laborer को रेफर करता है जो कि रोड्स या फिर कार्नल्स या फिर रेलवेज में काम करता है, ठीक है? हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है. ये वर्ड नेविगेटर से आता है जो कि कैनल वर्कर्स के लिए यूज किया जाता था. ये मोस्टली ब्रिटिश है एंड स्लाइटली ओल्ड फैशन्ड है. डेली लाइफ में तुम इसको हिस्टोरिकल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड देखोगे. इट इम्प्लाइज फिजिकल लेबर. एग्जाम्पल, द नेवी वर्कड लॉन्ग आवर्स बिल्डिंग द रेलवे. Now we have nebulous, and this describes something unclear, vague or lacking definite shape, meaning or structure. Nebulous एक ऐसी चीज को describe करता है जो कि unclear है, vague है and poorly defined है. You are not able to understand
कि वो क्या चीज़ है, ठीक है. इट ओरिजिनली रेफर टू क्लाउड्स और मिस्ट. ये वर्ड जो है आइडियाज, प्लान्स और शेप्स को भी डिस्क्राइब कर सकता है. समथिंग विच इज अनक्लियर, ठीक है. डेली लाइफ में एक आधा अधूरा बना हुआ प्लान कैन फील नेबुलस. इट इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी. एग्जाम्पल, शी हैड अ नेबुलस आइडिया ऑफ व्हाट शी वांटेड. Now we have nefarious, and this refers to actions that are wicked, criminal or morally evil in an extreme way. Nefarious ऐसे actions को describe करता है जो कि wicked है, cruel है, morally evil है, criminal से related है. ये word strong negative tone carry करता है and it is often used for schemes or deeds. Daily life में crime plots are called nefarious. ठीक है. It implies deep wrongdoing. Example, the villain plotted a nefarious scheme. Now we have Neocracy, and this means a system of government led by new or inexperienced leaders rather than seasoned authorities. Neocracy एक ऐसे leadership या फिर rule को refer करता है जो कि नए या फिर inexperienced लोग करते हैं, ठीक है. ये वर्ड क्रिटिकली यूज किया जाता है एंड इट सजेस्ट लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन पावर, क्योंकि ऑब्वियसली वो नए लोग हैं, इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको नहीं पता क्या चीज कैसे होती है, तो दे वुड मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे आर इनएक्सपीरियंस्ड. इट इम्प्लाइज नॉवेल्टी ओवर विजडम. एग्जाम्पल, द कंपनी सर्वर्ड अंडर अ नियोक्रेसी ऑफ यंग एग्जीक्यूटिव्स. Now we have Nervy, and this describes someone bold and daring, sometimes showing surprising courage in risky situations. Nervy एक ऐसे person को describe करता है जो कि bold है, daring है, and he is showing nerve. ठीक है, वो अपना दिखा रहा है कि देखो, गुर्दा दिखा रहा है कि देखो भाई मैं ये कर सकता हूँ. It can also mean anxious depending on context. ये word informal है. Daily life में speaking up boldly can be nervy, कि आप में nerves है कि आप ये चीज कर पा रहे हो, ठीक है. It implies courage. Example, that was a nervy decision under pressure. Now we have nestle, and this means to settle or lie comfortably and closely against someone or something for warmth or safety. Nestle का मतलब होता है जब आप किसी के साथ या फिर किसी चीज से स्नगल करके कंफर्टेबली सेटल होते हो, ठीक है, या फिर किसी प्रोटेक्टेड पोजीशन में होते हो. इट ऑफन डिस्क्राइब्स फिजिकल क्लोजनेस और वार्मथ. ये वर्ड एक जेंटल और अफेक्शनेट टोन कैरी करता है. डेली लाइफ में चिल्ड्रन और कैट्स नेसल अगेंस्ट their owners or parents. It implies comfort. Example, the cat nestled beside the fire. Now we have neuter, and this means to remove reproductive ability or to make something ineffective or neutral. न्यूट्रल का मतलब होता है जब आप किसी लिविंग बीइंग से उनकी रिप्रोडक्टिव पावर या फिर उनका जो सेक्सुअल फंक्शन है उसको आप छीन लो, ठीक है, उसकी पावर, उसकी इफेक्टिवनेस को खत्म कर दो. लिटरेरी, इट रेफर्स टू एनिमल्स बीइंग स्टेरिलाइज्ड, and figuratively it means to weaken or make something ineffective. Daily life में strict rules can neuter creativity. It implies loss of power. Example, the new policy neutered the dogs. Now we have nibble, and this means to take small bites of food or to eat something slowly in tiny amounts. निबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत जेंटली एंड बहुत स्लोली खा रहे हो एंड यू आर टेकिंग वेरी स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ इट, ठीक है. इट कैन बी यूज्ड लिटरेरी और फिगरेटिवली. ये वर्ड सजेस्ट करता है हेजिटेशन और ग्रेजुअल एक्शन. डेली लाइफ में स्नैक्स आर ऑफन निबल्ड, कि आप थोड़ा थोड़ा एक बार में थोड़ा थोड़ा खाते हो. इट इम्प्लाइज स्मॉलनेस. एग्जाम्पल, द रैबिट निबल्ड एट द कैरेट. Now we have Niggard, and this is a person who is extremely stingy or unwilling to spend money on resources. Niggard का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा कंजूस है एंड अपना पैसा या फिर अपने रिसोर्सेज स्पेंड नहीं करना चाहता या फिर देना नहीं चाहता, ठीक है. ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है विच मीन्स मिजरली, एंड दिस वर्ड हैज़ नथिंग टू डू विद रेस, लेकिन आज के टाइम पे वी हैव टू यूज इट केयरफुली. डेली लाइफ में समवन हु नेवर शेयर्स मे बी कॉल्ड अ निगार्ड, ठीक है. इट इम्प्लाइज टाइट फिस्टेडनेस. Example, he was a niggard with his money. Now we have nimble, and this describes someone or something quick and light of movement, showing agility and speed. Nimble एक ऐसे person या फिर एक ऐसी चीज को describe करता है जो कि बहुत quick है, light and agile है in their movement or thought. It can refer to the body or the mind. ये word एक positive tone carry करता है. Daily life में athletes and quick thinkers are nimble. Example, the nimble child dived in the pool easily. Now we have Nincompoop, and this is a humorous term for a silly or foolish person who often makes careless mistakes. ये word एक ऐसे foolish या फिर silly person को refer करता है, ठीक है, जो कि बहुत
केयरलेस मिस्टेक्स करता है, केयरलेस डिसीजंस लेता है, ध्यान नहीं रखता किसी चीज का. इट इज इनफॉर्मल एंड ऑफन प्लेफुल रादर देन हार्श. ये वर्ड ह्यूमरस साउंड करता है. डेली लाइफ में समवन मेकिंग ऑब्वियस मिस्टेक्स मे बी कॉल्ड अ nincompoop jokingly. It implies stupidity. Example, don't be a nincompoop, read the instructions first. Now we have nitwit, and this refers to someone who is slow thinking or lacking intelligence in an amusing or wild way. Nitwit का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत धीरे सोचता है, उसको चीजें जो है धीरे समझ में आती है, ठीक है, एंड ही इज अ लिटिल स्टूपिड. इट इज इनफॉर्मल एंड माइल्डली इंसल्टिंग. ये वर्ड जो है ऑफन फ्रस्ट्रेशन में यूज किया जाता है कि भाई तेरे को इतना भी नहीं अक्कल आ रही है, तेरे में इतनी भी समझ नहीं है क्या, ठीक है. डेली लाइफ में केयरलेस बिहेवियर कैन अर्न समवन दिस लेबल. इट इम्प्लाइज लैक ऑफ सेंस. एग्जाम्पल, ओनली अ निटविट वुड फॉरगेट द कीज अगेन. Now we have noble, and this means to interfere secretly or cheat in order to influence or fix a result unfairly. Noble का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जीतने के लिए, ठीक है, चीट कर रहे हो या फिर सैबोटाज कर रहे हो या फिर अनफेयरली उस चीज में इंटरफेयर कर रहे हो. इट ऑफन इम्प्लाइज अंडरहैंड और डिसऑनेस्ट एक्शन. ये वर्ड इनफॉर्मल है एंड मोस्टली ब्रिटिश है. डेली लाइफ में कोई मैच फिक्स करना, इट वुड बी डिस्क्राइब्ड एज नोबलिंग इट. It suggests deliberate wrongdoing. Example, the rival term tried to noble the competition. Now we have noose, and this is a looped knot that tightens when pulled, often used for trapping or securing something. Noose जो होता है एक looped knot होती है, गांठ बांधना होता है जिसको खींचने पे वो टाइट हो जाता है, ठीक है. This is especially associated with hanging, and this word carries a dark and a serious tone, and it is often used symbolically to suggest danger or threat. डेली लाइफ में उधार जो होता है, इट माइट फील लाइक अ नोज टाइटनिंग, कि इट फील्स सफोकेटिंग, ठीक है, यू आर इन अ डेंजरस पोजिशन एट दैट पॉइंट. इट इम्प्लाइज प्रेशर. एग्जाम्पल, द रोप वॉज टाइड इन टू अ नोज. Now we have nota bene, and this is a Latin phrase meaning note well, which is used to draw special attention to important information. Nota bene का मतलब होता है note well, which is कि आप जो है उस चीज पे स्पेशल अटेंशन ड्रॉ करो या फिर उस चीज को हाईलाइट करो कि इस चीज पे आपका फोकस जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसको हम NB से एब्रिविएट करते हैं, एंड ये फ्रेज जो है फॉर्मल है एंड लैटिन है. डेली लाइफ में टीचर्स यूज NB टू हाईलाइट की पॉइंट्स. It implies importance. Example, nota bene, attendance is compulsory. Now we have notary, and this is an official person authorized to witness and certify legal documents and signatures. Notary जो है एक official person है जिसको authority मिली होती है कि वो signatures और documents को certify करेगा, ठीक है. ये role legal है and administrative है nature में. Notaries help prevent fraud. डेली लाइफ में एफिडेविट्स एंड एग्रीमेंट्स आर साइंड बिफोर अ नोटरी, कि आप किसी नोटरी जो कि लाइक एक अथॉरिटाइज्ड पर्सन है उसके सामने आप ऐसे पेपर्स जो है साइन करते हो क्योंकि उस चीज का वो विटनेस बनेगा कि हाँ ये चीज जो है किसी के भी प्रेशर में नहीं हुई है एंड जो भी काम हुआ है वो विलिंगली हुआ है. एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट वॉज वेरीफाइड बाय अ नोटरी. नाउ वी हैव Notorious, and this describes someone or something famous for bad or undesirable reasons rather than good ones. Notorious एक ऐसे person को या फिर एक ऐसी चीज को describe करता है जो कि widely known है for their bad behavior or for a bad reason, ठीक है. ये word एक negative sense carry करता है and it is often used for criminal places or events. Daily life में scam prone areas may be notorious क्योंकि it is known for being a bad area जहाँ पे scams होते हैं, ठीक है. It implies infamy. Example, the city is notorious for traffic jams. Now we have novice, and this is a beginner who has little experience or knowledge in a particular skill or activity. Novice एक ऐसा person है जो कि किसी skill में या फिर job या activity में new है, उसको अभी उस चीज की ज्यादा knowledge नहीं है, ठीक है. He is a beginner. ये word suggest करता है inexperience and it can apply to profession, hobbies or religious life. Daily life में beginners are novices. Example, as a novice, she made a few mistakes. Now we have noxious, and this refers to something harmful, poisonous or dangerous, especially to health or the environment.
ये वर्ड एक ऐसी चीज को डिस्क्राइब करता है जो कि पॉइजनस है, हार्मफुल है या फिर हेल्थ के लिए डेंजरस है. इट इज ऑफन यूज फॉर गैसेस, सब्सटेंसेस और एनवायरमेंट्स. ये वर्ड सजेस्ट करता है सीरियस हार्म. डेली लाइफ में पोल्यूटेड एयर कैन बी noxious and it implies toxicity. Example, the factory released noxious fumes. Now we have nudge, and this means to gently push or touch someone to attract attention or encourage movement. Nudge का मतलब होता है जब आप किसी को subtly, ठीक है, बहुत ऐसे कि नोटिस में ना आए उस वे में किसी को ऐसे हल्का सा ऐसे करते हो उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ठीक है, हल्का सा पुश करते हो. इट कैन बी फिजिकल और फिगरेटिव. ये वर्ड ऑफन इम्प्लाई करता है परसुएजन विदाउट फेस, कि आप ऐसे करके बोलो कि चुप हो जा, ठीक है, कोई पर्सन बोल रहे तो यू वुड लाइक हल्का सा नज देम एंड यू वुड लाइक डोंट स्पीक, ठीक है. इट इम्प्लाइज लाइट प्रॉम्प्टिंग. एग्जाम्पल, ही नज्ड हिम टू स्पीक अप. Now we have nuptial, and this relates to marriage or wedding ceremonies and the celebrations connected with them. न्यूपिटल जो है वेडिंग्स और मैरिजेस से रिलेटेड वर्ड है. ये वर्ड जो है प्लूरल में यूज किया जाता है एंड इट हैज अ फॉर्मल टोन. डेली लाइफ में वेडिंग सेरेमनीज या फिर जो भी लाइक सेरेमनीज वेडिंग से रिलेटेड है उनको न्यूपिटल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल, दे सेलिब्रेटेड देयर न्यूपिटल्स विद क्लोज फैमिली. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused, practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.